Hello children, welcome to the digital class. In your last session, you learnt about what are integers, comparison of integers and representation of integers on the number line. In this session, you are going to learn addition of integers and subtraction of integers without using number line and using number line. Okay children, now let us know the learning objectives of this session. You will be able to add integers without using number line, add integers using number line, subtract integers without using number line, subtract integers using number line. Okay, before going to our topic, let us recall what are integers. The collection of positive numbers, 0 and negative numbers is called integers. Okay children, now you can observe the screen here. I am representing integers with z, and here you can observe infinity to minus 4, minus 3, minus 2, 1, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Here these are positive numbers, this is 0, these are negative numbers. Children, you can observe the screen here. I am taking a container in the 3 ovals. In the first I am taking negative numbers, in the second 0, in the third positive numbers. Okay, these are positive numbers, this is 0, these are negative numbers. So, the container can be called as integer set. Okay. Now, observe the number line. To the right side of 0, we will have positive numbers, and to the left side of 0, we will have negative numbers. Numbers to the right side of 0 are always positive. Numbers to the left side of 0 are always negative. Children, try to remember this. This is 0 on the number line. To the right side of 0, we will always have positive numbers. To the left side of 0, we will always have negative numbers. 0 is neither negative nor positive. Okay, now let us understand what is positive counter, negative counter and 0 pair. Children, here I am taking yellow coin which is representing a positive counter. Children, observe the screen. I am taking one coin which is equal to plus 1. I am taking 2 coins which is equal to plus 2. Now I am taking 3 coins which is equal to plus 3, 4 coins plus 4, 5 coins plus 5. Now I am taking red coin which represents negative counter. 1 red coin equal to minus 1, 2 red coins equal to minus 2, 3 red coins equal to minus 3, 4 red coins equal to minus 4, 5 red coins equal to minus 5. Now let us understand what is a 0 pair. A 0 pair represents the same number of positive counters and negative counters. Children, you can observe the screen. Here I am taking one yellow coin and one red coin. I can call it as a pair. When I add these two, what I will get? I will get a 0. Yes. So, we can call them as 0 pair. Here I am having one yellow coin with one red coin. Its total value is 0. Now, I am taking 2 yellow coins and 2 red coins. 2 yellow coins and 2 red coins. Now, what I am doing here? I am interchanging. I am making the pairs. So, this is the first pair, this is the second pair. Value of this first pair is 0, value of second pair is also 0. So, 0 plus 0 can be taken as 0. This is 0, this is also 0. I am taking now 3 yellow coins and 3 red coins. Now, I am rearranging them as pairs. First pair, second pair, third pair. Children, this pair value is equal to 0. This is also 0, this is also 0. So, the total value will be equal to 0. So, from this what you can understand? Plus 1 plus of minus 1 is equal to 0. Means when you take a positive counter and when you add with the negative counter, you will get the value 0. In the same way, when you take 2 positive counters and add with 2 negative counters, we will get 0. Next, when you take 3 positive counters and add with 3 negative counters, we will get 0. Children, try to understand this. Whenever we get a 0 pair, we have to take like this, in which you should have one yellow coin
and 1 red coin. Okay, now let us understand addition of integers without using number line. Now let us add 3 and 4. Okay, what is the addition of 3 and 4? It is 3 plus 4. 3 is a positive number, 4 is also a positive number. So I am taking 3 yellow coins to represent 3 and 4 yellow coins to represent 4. Now what I am doing? I am taking a container, I am placing 4 yellow coins in the container and again placing 3 yellow coins in the container. Now children, can you count the total number of yellow coins here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. So the value is 7. So what is 3 plus 4 equal to? 7. Now let us add 3 and minus 4. 3 plus of minus 4. So 3 is a positive number, minus 4 is a negative number. To take the coins, we have to take yellow coins for this 3 and we have to take red coins for this minus 4. So 3 yellow coins, 4 red coins. I am taking a container, I am placing the red coins first in the container, I am placing the yellow coins just above them. Okay children, now can you make any pairs here? Yes, this is the first pair, second pair, third pair. What are these pairs called? Yes, these are called 0 pairs. So the value of the first one is 0, second one is 0, third one is 0. So when you take out this 0, what is left in the container? Only 1 red coin. Then the value will be equal to minus 1. Yes. So what is the answer here? 3 plus of minus 4 is equal to minus 1. Now let us add minus 3 and 4. Okay children, now which coins we have to take to represent this minus 3? Yes, we have to take red coins. And what coins you have to take to represent this 4? Yes, we have to take yellow coins. Now I am taking the container, placing the yellow coins first and placing the red coins just above the yellow coins. Now here can you make any pairs? Yes, we can make 3 pairs. First pair value 0, second pair value 0, third pair value is also 0. When we take out this 0, what is left in the container? Yes, we left with only 1 yellow coin. Its value is plus 1 or we can take 1. So what is minus 3 plus 4 equal to 1. Now let us add minus 3 and minus 4. Minus 3 plus of minus 4. Okay children, now which coins you have to take to represent this minus 3? Yes, red coins. And which coins you have to take to represent this minus 4? Yes, red coins. Now again I am taking container, I am placing the red coins in the container. Again I am placing these red coins in the container. Okay children, now can you make any pairs here? No. Why? We have only red coins, we do not have any yellow coin. So what you have to do? You have to count the number of red coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer is minus 7. Why? Because these are negative counters. So minus 3 plus of minus 4 is equal to minus 7. Now let us understand subtraction of integers without using number line. Let us subtract 2 from 5. Children, you try to understand this. Subtract 2 from 5 means what you have to do? We have to do 5 minus 2. Subtract 2 from 5 means 5 minus 2. Okay. Now I am taking the container. I am taking 5 coins in the container because this is a positive value. Okay. Here we have 5 yellow coins. Now what we have to take out? We have to take out this 2. So now what I am doing? I am taking out, this is 5, this is 2. So I am taking out now 2 yellow coins. Now how many coins are left in the container? Yes, 3 coins. So what is the value of 5 minus 2? 3. Let us subtract minus 2 from 5. Children, here subtract minus 2 from 5. So 5 minus of minus 2. Now again I am taking a container, I am taking 5 yellow coins to represent plus 5.
Here what we have to do, we have to take out the negative counters, but we do not have any red coins here. So what you have to do, we have to take zeros. So when we do not have two negative counters, what I am doing here, I am taking two zeros. These two zeros can be taken as pairs. Yes, see, before we do not have any negative counters. So what I have done, I have taken zeros, and that 0 is taken as 0 pair, in which we will have one yellow coin and one red coin. Like that I have taken two pairs. Now are you able to observe red coins? Yes. Now from this what you can understand, we have to remove two negative coins from 5 positive coins. So now can you remove these two negative coins? Yes. Now what is left in the container? Only yellow coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All the coins are yellow, so we have to take it as plus 7. So what is 5 minus of minus 2? Yes, it is equal to 7. Now let us subtract 2 from minus 5. Minus 5 minus 2. Okay children, now I am taking container. Minus 5 represents red coins. So I am taking 5 red coins here. From this what we have to take out? We have to take out 2, but we do not have any yellow coins here. What you have to do? Again the same procedure. When you do not have two positive counters, what we have to do? We have to take two zeros. These zeros can be taken as again pairs. Okay, now are you getting the yellow coins here? Yes. So how many yellow coins can be taken out here? 2. So now I am taking out the 2. What are left in the container? Only red coins. How many red coins? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All of them are red coins. So what is the value? Minus 7. So what is minus 5 minus 2, which is equal to minus 7. Now let us subtract minus 2 from minus 5. Minus 5 minus of minus 2. Minus 5, we are taking red coins. From this what you have to do now? We have to take out two negative coins. Do you have negative coins here? Yes. So we have to take out two negative coins. So when I take out two negative coins, what are left in the container? Only 3 red coins. As they are red coins, the value will be equal to minus 3. So what is minus 5 minus of minus 2? Yes, it is minus 3. Let us solve the following problems. Children, observe the screen. 7 plus of minus 6. Without using counters also we can solve the problems. How? Let us see. Children, you can see the screen. Here it is plus. Here you have bracket. In mathematics, when you have like this bracket, we have to think it is as a multiplication. So plus into minus is equal to minus. Plus into minus is equal to minus. Now we got 7 minus 6. What is 7 minus 6 equal to? Yes, it is 1. Now what I am doing here? 7 minus of minus 6. Minus of minus 6. I am reading bracket as of. Okay. Minus of minus 6. So what is minus into minus? Plus. What is 7 plus 6? Yes, it is 13. Next, minus 7 plus 6, minus 1. Next, minus 7 plus of minus 6, which is equal to minus 7 minus 6. I am writing the answer as minus 13. How it is possible? Now I will explain. Children, try to understand this. If the integers have same sign, then add them and put the sign they have. Children, you can observe the screen here. Both the integers are having plus sign. So what I have done? I have added them, and which sign they have? Plus sign. So I am taking it as plus 13 or simply 13. Here also you can observe minus 7 minus 6. Both the integers are having negative sign. So what I am doing here? I am adding them. What is 7 plus 6? 13. Which sign do they have? Minus. So I am taking it as minus 13. Children, are you able to understand this one here? When two integers are having same sign, we have to add them and put the sign they have. Here also the same. They are having negative sign. I am adding them and taking the negative sign. If the integers have different sign, then
subtract them and put the sign of the greater number. Children, you can observe the first problem here, plus 7 minus 6. They are having different sign. When they are having different sign, what you have to do? You have to do subtraction. What is subtraction? 7 minus 6. What is 7 minus 6 equal to? 1. Here which number is greater? 7. 7 is having positive sign, so I am taking it as plus 1. Now here you can observe, children, minus 7 plus 6. Both are having different sign. So what we have to do? We have to do subtraction. What is 7 minus 6? 1. But we have to take minus because the greater number is having negative sign. Now let us use this to solve some problems. Children, read the question here. Minus 6 plus of minus 5 plus of minus 8. Now I am opening the brackets. Here outside we have to take plus sign, plus into minus, minus, plus into minus, minus, plus into minus, minus. Children, what you are observing here? All the three integers are having same sign. All the integers are having same sign. When they have same sign, what we have to do? We have to add them and put the sign they have. So what I am getting here? 6 plus 5, 11, 11 plus 8, 19. Answer is minus 19. Let us go for the second problem here. Minus 3 plus of minus 8 plus of plus 17 plus 5. Now I am opening the brackets. Outside we have to take plus, plus into minus, minus, plus into minus, minus, plus into plus, plus. We have only plus. I am taking this plus. Now here what I am doing here? I am making the groups. Try to understand this. Here these both integers are having same sign. So we have to add them and we have to put negative sign. Here these two integers are having same sign, positive sign. So we have to add them and put the positive sign. So what is 8 plus 3? 11. We have to take minus 11. What is 17 plus 5? 22. So we have to take plus 22. Children, try to understand this here. Minus 3, minus 8. Both have negative sign. So we are adding them and taking negative sign. Here both have positive sign. I am adding them and taking positive sign. Now I am making another group here. These both have different sign. When numbers are having different sign, what you have to do? We have to do subtraction. 22 minus 11 is 11. Greater number is having positive sign. So the answer is 11. So here both the integers are having different sign. We have to find the difference, means we have to subtract and we have to take the sign for the greater number. So answer is 11. See children, these are the examples for addition. Now let us take examples for subtraction. Minus 6, minus of minus 5, minus of minus 8. I am opening the brackets here. We do not have anything. We have to take it as plus, plus into minus, minus, minus into minus, plus, minus into minus, plus. Now what I am doing here, as these two integers are having plus sign, I am making them as a group and I am adding them because they have the same sign. When they have same sign, we have to add them and we have to take the sign they have. So 8 plus 5, 13, they have plus sign, plus 13. Now I am making another group here. Children, observe, this group is having two integers, but they are having different signs. When they have different signs, what you have to do? We have to subtract. So when you subtract 6 from 13, what you will get? 7. As the greater number is having plus sign, the answer is 7. Now let us go for the another example. Minus 3, minus of minus 8, minus of plus 17, minus 6. I am opening the brackets now. Plus into minus, minus, minus into minus, plus, minus into plus, minus, minus 6. Now again I am making the groups here. Children, observe, this first group is having two integers with different sign. Different sign. So what you have to do? You have to do subtraction. 8 minus 3 is 5. The greater number is having plus. So we have to take it as plus 5. Here two integers are having same sign. So we have to add them. What is 17 plus 6? 23. So as they have negative sign, we have to take minus 23. Now again I am making a group here. Try to understand. These both are having different sign. When they have different sign, what you have to do? You have to subtract. What is 23 minus 5? 18. But here we have negative sign for the greater number. So answer is minus 18. Children, like this you can solve problems without using number line by these two methods. You can use counters
and without using counters also you can solve problems from your textbook. Now try yourself. Simplify the following without using number line. Minus 7 plus of plus 5, minus 7 plus of plus 5, minus 6 plus of minus 10 plus 5 plus 17. Simplify the following without using number line. 8 minus of minus 5, minus 6 minus of plus 5 minus of plus 2. Okay, now rules to add and subtract integers on the number line. Children, to find the addition or subtraction of integers on the number line, we have to know these rules. First one, go to the first integer on the number line. Second, check the sign between the integers. If there is positive sign, then turn to the right. Children, try to remember this. If there is positive sign, then turn right. If there is negative sign, then turn left. If there is positive sign, you have to turn right. If there is negative sign, you have to turn left. Check the sign for the second integer. If there is positive sign, then move forward. If there is negative sign, then move backward. Children, I am taking a number line here. 0 to the right side positive numbers, to the left side negative numbers. Now let us identify the following integers on the number line. First is 2, yes. Next minus 4, yes. Next 9, next minus 7, next 0. Children, like this you have to identify integers on the number line. If you are able to identify integers on the number line, you can add and subtract integers using the rules. Addition of integers using number line. Okay children, now what I am doing here, adding 3 and 4 using number line. So 3 plus 4. Children, what is the first integer here? Yes, 3. So what you have to do, what is the first rule? We have to go to the first integer, right. And what is the sign? Okay, I am going to the first integer. You can see here with the arrow mark, this is the right side, this is the left side. Now check the sign, plus. If it is plus, you have to take which turn? Right turn. So what I am doing here, I am taking right turn now. For this arrow mark, this is forward direction, this is backward direction. Now what I am doing now, I am taking the second integer. Okay children, what is the integer here? 4 plus 4. So you have to move forward or backward? Yes, you have to move forward. How many steps? 4 steps. Now I am taking a frog at 3 and this frog is jumping 4 steps forward. Now where is the frog now? Yes, it is at 7. So what is 3 plus 4 equal to 7? Now let us add minus 3 and 4 using the number line. Minus 3 plus 4. What is the first integer? Minus 3. So we have to go to the minus 3 first. Okay, this is the right side, this is the left side. Now what is the sign between the integers? Yes, it is plus. So which turn we have to take? Right turn. So I am taking an arrow mark here. See, right turn. So this is forward direction, this is backward direction. Now I have to select the second integer. What is the second integer? Yes, 4. It is plus 4. So we have to move forward or backward? Yes, we have to move forward. How many steps again? 4 steps. So I am taking a monkey here. The monkey is moving 4 steps forward. Now where is the monkey? Yes, it is at 1. So what is minus 3 plus 4 equal to? 1. Now let us add minus 2 and minus 5 using the number line. Okay children, what is the first integer? Minus 2. I am going to the first integer on the number line. Okay, I am taking the arrow mark here, left, this is left side, this is right side. What is the sign between the integers? Yes, it is plus. So we have to turn right. I am turning right now. This is forward direction, this is backward direction for this arrow mark. What is the second integer? Minus 5. Here try to understand children, the second integer is minus 5. So as it is negative, we have to move backward. We have to move backward. So again I am taking a monkey here. This monkey is jumping backward. How many steps? Yes, 5 steps. Now where is the monkey? Yes, it is at minus 7. So what is the answer? Minus 7. Now let us add 2 and minus 5 using the number line. 2 plus of minus 5. What is the first integer? 2. Yes. We are going to the integer.
As the sign is between the integers is plus, we are selecting right side, we are turning right. Okay, now second integer is minus 5, so you have to move forward or backward? Yes, you have to move backward. How many steps? 5 steps. So I am taking a monkey again. This monkey is jumping backward. How many steps? 5 steps. Now where it is? Yes, it is at minus 3. So what is 2 plus of minus 5 equal to? Minus 3. Now let us subtract integers using number line. Subtract 5 from 9 using the number line. Subtract 5 from 9. So 9 minus 5. What is the first integer? 9. So we have to select the 9 on the number line, left, right. As the sign between the numbers is negative, we have to select left. So we have to turn left. This arrow mark indicating left direction, forward, backward. See children, for this arrow mark, this is forward direction, this is backward direction. I am selecting the second integer. What is the second integer here? 5, which is positive. You have to move forward. So I am taking a monkey, it is moving forward. How many steps? 5 steps. So the monkey is at which number now? 4. So what is 9 minus 5 equal to? 4. Now children, subtract 5 from minus 1 using the number line. See children, 5 from minus 1. So minus 1 minus 5. The first integer is minus 1. So you have to go to minus 1. So left side, right side. What is the sign between the integers? Yes, it is minus. So which direction you have to turn? Left. Yes, I am taking left turn now. Right. For this arrow mark, this is forward direction, this is backward direction. Now what is the second integer? Yes, it is 5 plus. So you have to move forward or backward? Yes, we have to move forward. How many steps? 5 steps. Again this monkey is jumping 5 steps forward. Now where is the monkey? Yes, it is at minus 6. So what is minus 1 minus 5 equal to? Minus 6. Now let us subtract minus 3 from 4 using the number line. 4 minus of minus 3. First integer is 4. So you have to go to 4. This is the arrow mark, left side, right side. As the sign between the numbers is minus, you have to select the left side. So you have to turn left. Okay, for this direction, this is forward and this is backward. What is the second integer? Minus 3. As it is minus 3, we have to move forward or backward? Yes, we have to move backward. How many steps? 3 steps. So the monkey is at 4, now moving backward by 3 steps. So where it reached? Yes, it reached 7. So what is 4 minus of minus 3, which is equal to 7. Minus 4 minus of minus 3. What is the first integer? Yes, it is minus 4. So you have to select minus 4 on the number line. As the sign between the integers is minus, we have to turn left. So I am turning left now. For this arrow mark, this is forward direction and this is backward direction. The second integer is minus 3. As it is minus 3, what you have to do? We have to move backward or forward? Yes, we have to move backward. How many steps? 3 steps. Okay, the monkey is at minus 4, moving backward by 3 steps. Where it reached? Yes, it reached minus 1. So what is minus 4 minus of minus 3 is equal to minus 1. Children, like this you can represent integers on the number line. At the same time you can add and subtract 2 integers using the number line. Children, try yourself. Add the following integers using the number line. Minus 7 plus of plus 5, 5 plus of minus 6. Find the following using number line. Minus 9 minus of minus 3, 8 minus of plus 5. Okay children, see, in this session you learnt about addition and subtraction of integers using counters and using normal procedure. By opening the brackets and using some rules, we are finding addition and subtraction of integers. And at the same time you learnt about addition of 2 integers on the number line, subtraction of 2 integers on the number line. Okay children, let us meet in our next class. For better understanding of the concepts, solve the worksheets, please visit the official website of SCRT for worksheets. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कहिए कैसे हैं आप सब। सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? तो आइए 6th क्लास का सबक पढ़ते हैं, खुदा की शान। बच्चों, खुदा की शान हम्द है और हम्द उस नज़्म को कहते हैं जो खुदा की तारीफ़ में लिखी जाती है। खुदा की शान के शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सारी दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। उसने हमें आँख, कान, हाथ, पैर और ज़बान अता की है। अल्लाह के हुक्म से ही मौसम बदलते हैं, वही हर चीज़ पर क़ादिर है। बच्चों, सबक की तदरीस से पहले आइए हम इसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली सन 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। उर्दू शायरी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम बड़ा अहमियत का हामिल है। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं, जिनमें हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुक़द्दमे शेर व शायरी काबिल ज़िक्र है। हाली के शेरी तख्लीक़ात में उनकी तसनीफ़ मद्दो जज़्र इस्लाम अहमियत रखती है, जो कि काफ़ी मकबूल हुई। और बच्चों, अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया है। सन 1914 ईस्वी में हाली की वफ़ात यानी उनका इंतकाल हुआ। बच्चों, सबक की तदरीस से पहले मैं आपको ये जो नज़्म खुदा की शान है तरन्नुम में पढ़कर सुना रही हूँ। फिर उसके बाद बच्चों मैं ये सबक पढ़ूँगी, आप गौर से सुनिएगा, फिर उसमें नए आने वाले अल्फाज के हम माना अख्ज़ करेंगे। ऐ ज़मीं आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। ऐ ज़मीं आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी जुबान। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। आई मौसम से तंग जब खिलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब, तूने बरसात भेज दी या रब। सबके गर्मी से थे खता औसान, में बरसने से आई जान में जान। गए जब में से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरी चल पड़ी पिछवा। या तो थी सारी चीज सील रही, या रहा सील का ना नाम कहीं। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार,
जंगल और टीले हो गए गुलजार। तू ही यूं रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। कि सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। ऐ ज़मीं आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। तो बच्चों, मज़ा आया आपको? मैं आपको ये नज़्म पढ़कर सुना रही हूँ बच्चों। आप इस नज़्म को गौर से सुनिएगा और इसमें नए आने वाले अल्फाज के माना नोट करते रहें। नज़्म ख़्वानी के बाद अल्फाज के माना अख्ज़ करेंगे। ऐ ज़मीं आसमां के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। आई मौसम से तंग जब खलखत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब, तूने बरसात भेज दी या रब। सबके गर्मी से थे खता औसान, मैं बरसने से आई जान में जान। गए जब में से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरे चल पड़ी पछवा। या तो थी सारी चीजें सील रही, या रहा सील का न नाम कहीं। जाड़ा आ पहुंचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंगल और टीले हो गए गुलजार। तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। कि सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के खुरबा। बच्चों, आपने ये हम्द देखी। अब आइए हम इस हम्द में आने वाले नए अल्फाज के माना देखते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं बच्चों जिन्हें आप नहीं जानते, तो हम उनके माना अक्स करते हैं। आइए, इसमें लफ्ज़ आया है खलखत। तो बच्चों, खलखत के माना है मखलूक, यानी अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया है। इसका आप जुमला भी इस तरीके से बनाते हैं, खलखत, जिसके माना है मखलूक। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को बनाया है। और लफ्ज़ है औसान खता होना, जिसके माना है होश उड़ जाना। औसान खता होना, होश उड़ जाना। किसी ख़तरनाक चीज़ को जब हम देखते हैं तो फिर होश उड़ जाते हैं। और लफ्ज़ है बच्चों गुलजार। गुलजार के माना है बाग, फुलवारी। इसका जुमला हम यूँ बना सकते हैं, गुलजार में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिलते हैं। और एक लफ्ज़ है बच्चों सदा। सदा का मतलब है हमेशा। सदा के माना हमेशा। अल्लाह ताला की ज़ात सदा बाकी रहने वाली है। इस तरीक़े से हम जुमला बना सकते हैं। और एक लफ्ज़ है बच्चों अजीरन। अजीरन के माने हैं दो भर मुश्किल। मौसम गर्मा में ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और लफ्ज़ है पछवा का मतलब है बच्चों मगरिब की जानिब से चलने वाली हवा। मगरिब की जानिब से चलने वाली हवा, इस पिछवा को चलाने वाला भी अल्लाह ताला है। रुत, रुत का मतलब है मौसम। रुत अल्लाह के हुक्म से बदलते रहते हैं। और सील, सील का मतलब है बच्चों गीला, नम। गर्मी के मौसम में सील का नामो निशान नहीं रहता। गर्मी का मौसम में चूँकि हिद्दत और तपिश रहती है तो फिर सील का नामो निशान नहीं रहता। बच्चों, हम आपने पढ़ी, आइए इसकी हम तशरीह देखते हैं। ऐ ज़मीं आसमां के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक।
तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। इसका मतलब ये है बच्चों, शायर कह रहा है ज़मीन, आसमान और सारी दुनिया जहाँ का बनाने वाला अल्लाह ताला है, इसीलिए उसी के कब्जे में सारी खुदाई है और उसी के वास्ते बड़ाई है, यानी सब उसी की बड़ाई बुजुर्गी बयान करते हैं। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है तो सबको पालने वाला वही है, वही सबका पालनहार है और काम सबके वही बनाता है। भूख में तू हमें खिलाता है, भूख लगती है तो खिलाने वाला भी अल्लाह ताला है। प्यास में तू हमें पिलाता है, प्यास में भी अल्लाह ताला, प्यास बुझाने वाला भी अल्लाह है और प्यास में पिलाने वाला भी अल्लाह ताला है। और यहाँ पर देखिए शायर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र इन अशार में किस तरीके से कर रहे हैं। आँख दी तूने देखने के लिए, अगर अल्लाह ताला हमें आँख नहीं देता, आँख की नेमत नहीं होती, तो इस कायनात को, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत सी दुनिया को बच्चों हम नहीं देख सकते थे। अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है। तो शायर कह रहे हैं आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। अल्लाह ताला जो हमें काम करने के लिए, अल्लाह ताला काम करने के लिए हमें जो हाथ और पाँव अता किए हैं, उसकी वजह से आसानी से हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए शायर कह रहे हैं काम करने को हाथ पाँव दिए, बात के सुनने को दिए दो कान। समात के लिए अल्लाह ताला ने बच्चों क्या अता किए हैं, हमें दो कान अता किए हैं। बात के सुनने को दो कान अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता हुए हैं। और बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान, यानी हम ज़बान के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, यानी हम अपनी बात कहते हैं। दिन बनाया कमाई करने को, दिन में लोग, इंसान सब काम करते हैं, कमाते हैं। और रात दी तूने नींद भरने को, जब दिन में इंसान काम करता है, थक जाता है, तो थका हारा इंसान आराम करता है, उसे नींद की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने रात उसे अता की है। आई मौसम से तंग जब खलकत, यानी मखलूक जानदार भी होती है, बेजान भी होती है। और मौसम से तंग वही खिलकत आती है जो जानदार होती है, जिसमें जान होती है, जिसमें इंसान भी है, हैवान भी है। तो जब एक ही मौसम जब रहता है तो उससे यानी मखलूक तंग आ जाती है। तो यही शायर कह रहे हैं कि आई मौसम से तंग जब खलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। एक मौसम बरसात है, बरसात से जब तंग आ गई खलकत, तो अल्लाह ताला ने बरसात को बदल कर कौन सा मौसम अता कर दिया, जाड़े का। तो इसीलिए शायर कह रहे हैं तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब गर्मियाँ हमको नागवार हो गई, गर्मी से लोग बेहाल हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया अपने मखलूक के लिए, तूने बरसात भेज दी या रब। बरसात का मौसम फिर आ गया। अब देखिए सबके गर्मी से थे खता औसान खता, सब बेहाल थे गर्मी की वजह से, होश उड़े हुए थे। फिर बरसात, फिर क्या हो गया, गर्मी की वजह से सबके होश उड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने फिर मैं बरसने से आई जान में जान, फिर बरसात भेज दी। मैं का मतलब है बरसात, मैं बरसने से आई जान में जान आना, यानी इंसान को राहत मैसर आ गई गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जो बेहाली थी वो चली गई और इंसान बहाल हो गया बरसात की वजह से। गए जब में से लोग सब घबरा। अब फिर बरसात में भी जब बहुत ज़्यादा बरसात हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसानात होने लगे, बरसात की वजह से भी दुश्वारी लोगों को हायल होने लगी, इससे घबराने लगे, तो बरसात का मौसम भी चले गया। हुक्म से तेरे चल पड़ी पछवा, मगरिब की जानिब से अल्लाह ताला के हुक्म से हवाएं चलने लगी। या तो थी सारी चीज़ें सिल रही, सारी चीज़ें जो है बरसात की वजह से या नम थी। अब देखिए बरसात के जाने पर या रहा सील का ना नाम कहीं, उसकी वजह से, बरसात की जाने की वजह से उसका नाम नहीं रहा, यानी वो नमी खत्म हो गई। जाड़ा आ पहुंचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। अब बरसात के बाद देखिए जाड़े का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया, और देखते ही देखते ये बरसात के दिन और रात किस में बदल गए, जाड़े के दिन और रात में, दम के दम में, देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से इस मौसम में तब्दील हो गए, इस मौसम में तब्दील हो गए। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी,
मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जब लोग सर्दी से भी जो है बेहाल होने लगे, सर्दी भी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान की और तमाम मखलूक़ात की ये मुश्किल भी आसान कर दी। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार। जाड़े के बाद क्या आ गया? बहार का मौसम। बहार का मौसम बच्चों कैसा होता है? जिसमें पेड़ और पौधे सरसब्ज और शादाब यानी हरे भरे हो जाते हैं। जंगल और टीले यानी मिट्टी का बड़ा तोदा, वो जहाँ पर उस पर भी बहुत सारे फूल खिलते हैं और वो भी खूबसूरत मंजर पेश करता है। जंगल और टीले भी गुलजार में यानी चमन में, फुलवारी में तब्दील हो जाते हैं। कौन से मौसम में बच्चों? बहार के मौसम में। तो यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। शायर अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे हैं इस तरीके से, या रब कि तो मौसम को इस तरीके से बदलता रहा कि दुनिया का काम चलता रहा। जब से कायनात बनी है बच्चों, जब से ये दुनिया बनी है, मौसमों का ये तगय्युर चल रहा है। जाड़े का मौसम आता है, वो गुजर जाता है, तो फिर गर्मी आती है, गर्मी के मौसम के बाद फिर मौसम बरसात। इस तरीके से मौसमों का तगय्युर चलता रहता है। किसके हुक्म से होता है ये सब? अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आखिरी शेर में अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे हैं कि सदा तूने मुश्किलें आसान, तमाम मखलूक की मुश्किलें हमेशा परवरदिगार तूने ही आसान की हैं। तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। मुश्किल कुशा यानी मुश्किल को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। इसीलिए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली यहाँ फरमा रहे हैं, तो सदा से इंसानों की तमाम मखलूक़ात की मुश्किलें आसान करने वाला है। इसीलिए हम तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान होते हैं, हम तेरी बड़ाई और अज़मत का इकरार करते हैं। बच्चों, तशरीह आपने देखी इस नज़्म की। बच्चों, इसका खुलासा यूँ इस तरीके से है, देखिए, खुदा की शान में लिखी जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं। शायर ने इस नज़्म में खुदा की शान नहायत आसान, सलीस, रवां दवा अंदाज में लिखी है, जिसको पढ़कर खुदा की अज़मत और उसकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, इसलिए कि ज़मीन और आसमान भी उसी के बनाए हुए हैं। सारी खुदाई यानी उसकी बनाई हुई कायनात इतनी खूबसूरत है जिसको देखकर उसकी बड़ाई का अंदाज़ा होता है। वही हर जानदार को ग़िज़ा मुहैया करने वाला और सबकी मुश्किल आसान करने वाला है। भूख में खिलाने पिलाने वाला, प्यास बुझाने वाला वही है, इसलिए कि खाने की तमाम चीज़ें और पानी उसी ने बनाया। उसने हमें देखने के लिए आँख जैसी नेमत दी और सुनने के लिए कान अता किए, काम करने को हाथ पाँव दिए, बात करने को ज़ुबान दी। दिन काम करने और कमाई करने के लिए बनाया, रात को आराम के लिए बनाया। अल्लाह ने मौसम बनाए, जैसे गर्मी का मौसम। जब लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी दोभर हो जाती है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए मौसम बदल देता है। बरसात का मौसम आ जाता है, सारा माहौल खुशगवार हो जाता है। फिर पश्चिम की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जाड़े का मौसम आ जाता है। इसके बाद मौसम बहार की लहलहाहटें देखने को मिलती हैं, दरख्तों पर फूल खिलने लगते हैं, सारा माहौल हरा भरा हो जाता है, चरिंद परिंद खुशियों में झूमने लगते हैं। इस तरह एक के बाद एक मौसम को बदल कर तो हर मुश्किल आसान करता है। बच्चों, ये खुलासा अभी आपने देखा। अब आइए ये कीजिए के तहत हम सबक के मशक़ों की जानिब आते हैं। तो पहले हमारी इस्तेदाद है सुनिए बोलिए, उसकी तरफ आते हैं। ये कीजिए के तहत आपको इन इस्तेदादों को मुकम्मल करना है। हमारी पहली इस्तेदाद है सुनिए बोलिए। सुनिए बोलिए के तहत आपसे चंद सवालात पूछे जाएंगे, आपको इनका जवाब देना है। पहला सवाल है, ये नज़्म किसके बारे में है और आपने क्या समझा? तो बच्चों, इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से आपको और सवालात जो यहाँ पर मैं आपको पूछ रही हूँ उनके जवाब देने हैं। ये नज़्म किसके बारे में है और आपने क्या समझा? ये नज़्म हम्द है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। इस नज़्म से हमने ये समझा कि ज़मीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह ताला है और उसी के कब्ज़े में सारी खुदाई है।
اس طریقے سے بچوں جیسا جواب ابھی میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں ہماری اگلی استعداد کی جانب جو ہے پڑھیے لکھیے. اس کے تحت بچوں میں آپ کو 5 سوالات پوچھوں گی، اس کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے پڑھیے. تو یہ جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حمد کے وہ اشعار، اس طریقے سے آپ دوسرے سوال کرنے کے قابل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر بطور مثال میں آپ کو یہ جواب بتا رہی ہوں. سوال دیکھیے گا پھر. حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے پڑھیے. تو حمد کے وہ اشعار جن میں موسموں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہیں: گرمیاں ہو گئی اجیرن جب تو نے برسات بھیج دی یا رب، جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات. ان اشعار میں گرمی، برسات، جاڑا تینوں موسموں کا ذکر ہے. اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. اور اگلی استعداد ہے بچوں خود لکھیے. خود لکھیے میں بچوں مختصر جوابی سوالات بھی ہیں اور طویل جوابی سوال ہیں. مختصر جواب آپ کا 3 یا 4 جملوں میں ہونا چاہیے اور مختصر 3 سوالات آپ کو لکھنے ہیں. 3 سوالوں کے جواب آپ کو لکھنے ہیں. پہلا سوال ہے ہمیشہ صرف دن یا پھر رات ہی ہوتی تب کیا ہوتا. بطور مثال آپ کو اس کا جواب میں بتاتی ہوں. ہمیشہ صرف دن یا پھر رات ہی ہوتی تب کیا ہوتا. تو آپ اس طریقے سے لکھیں ہمیشہ صرف دن ہی ہوتا تو انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا، اسے آرام کا موقع ملتا ہی نہیں. اور اگر ہمیشہ صرف رات ہی ہوتی تو پھر اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دن اور آرام کے لیے رات بنائی ہے. اب مختصر جوابی سوالات سے بچوں ہم آتے ہیں خود لکھیے کے تحت طویل جوابی سوالات پر. طویل جوابی سوالات دیکھیے بچوں یوں ہیں: مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کم از کم 10 جملوں میں دینا چاہیے. 10 جملوں میں آپ کا جواب تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا جہاں کا مالک کیوں کہا گیا؟ میں آپ کو نمونتاً بتاتی ہوں کس طریقے سے لکھنا ہے. آپ کو بطور مثال جواب کس طریقے سے شروع کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی. آپ اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنا پورا جواب لکھیے. اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا جہاں کا مالک کیوں کہا گیا ہے؟ ساری دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. زمین آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی کے قبضے میں ساری خدائی ہے. تمام مخلوقات کا بنانے والا سب کا خالق اللہ ہے. سب کی حاجتیں وہی پوری کرتا ہے. بھوک میں کھلاتا ہے، پیاس میں پلاتا ہے اور تمام نعمتیں اس نے عطا کی ہیں. اس طریقے سے آپ اپنا جواب مکمل کرتے ہیں 10 جملوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاں کا مالک کہا گیا ہے. آپ اس طریقے سے اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں. اگلی استعداد ہے بچوں ہماری لفظیات. لفظیات میں آپ کو ایک جملہ دیا جائے گا، اس کا خط کشیدہ لفظ کے صحیح معنی آپ کو قوسین میں لکھنے ہیں. ساری خلقت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. الف اخلاق، بے مخلوق، جیم خالق. آپ کو ڈھونڈ کر اس کے صحیح معنی الف بے جیم کون سا آپ کو صحیح لگ رہا ہے، اس لفظ کے معنی کون سا آپ کو صحیح لگ رہے ہیں، اس لفظ کے صحیح معنی کیا ہے آپ قوسین میں ڈالیں گے. اس کے بعد بچوں آپ کو بے اور جیم کے سوالات حل کرنے ہیں. اب ہم اس کے بعد آتے ہیں توصیف میں. تخلیقی اظہار کے تحت بھی آپ کو 3 سوالات حل کرنا ہے. نظم خدا کی شان کو نثر میں تبدیل کیجیے. اس حمد کو اجتماعی طور پر لحن سے پڑھیے. مختلف موسموں کی تصویریں بنائیے اور ہر ایک موسم کی خصوصیت بیان کیجیے. اور بچوں توصیف کے تحت آپ کو 2 جوابات حل کرنے ہیں. اس حمد سے وہ اشعار جو آپ کو پسند ہے لکھیے اور ان کی تشریح کیجیے. آپ کی جماعت میں اس حمد کو کس نے بہتر انداز میں پڑھا اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ اس نے اچھا پڑھا، یہ بھی لکھیے بچوں. اور ہماری آخری استعداد ہے زبان شناسی. اس کی جانب ہم آتے ہیں. بچوں حروف تہجی تو ہم جماعت اول سے پڑھ رہے ہیں. الف سے بڑے یہ تک جو حروف آتے ہیں انہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، جن کو سادہ آواز والے حروف بھی کہتے ہیں، جن کی تعداد 36 ہے.
और दो चश्मिये से बनने वाले हरूफ मुरक्कब हरूफ या हकारी आवाज़ वाले हरूफ कहते हैं, जिनकी तादाद 14 है। जैसे बे है भा, पे है फा, ते है ठा, टे है ठा, जिम है झा, चिम है छा, दाल है धा। ऐसा 14 अल्फाज, 14 हरूफ है बच्चों। ये हकारी आवाज़ वाले हरूफ कहलाते हैं। आपको यहाँ पर बतौर मिसाल चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं जिसमें हाय, हवस और दो चश्मिये से बनने वाले अल्फाज दिए गए हैं। आपको फ़र्क को पहचानना है। बहक, भनक, इसमें दो चश्मिये कहाँ इस्तेमाल हुआ है, आवाज़ से आपको पहचानना है। बहक, भनक, तो भनक में दो चश्मिये का इस्तेमाल हुआ, बे है। भनक, पहाड़, फाड़, फाड़ में पे है फा, ये हकारी आवाज़ वाला हर्फ है, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आवाज़ के एतबार से हुरूफ तहजी की दो किस्में होती हैं, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। वो हुरूफ जिसे अदा करते वक्त आपकी आवाज़ दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती, हुरूफ इल्लत कहलाता है। और उर्दू में अलीफ, वाव और ये हुरूफ इल्लत है। मसलन लफ्ज़ काम में काफ और मीम हुरूफ सही है और अलीफ हुरूफ इल्लत है। उसी तरीके से बच्चों शाम में शीन और मीम हुरूफ सही है और अलीफ हुरूफ इल्लत है। तो बच्चों आपने समझा ना हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही किसे कहते हैं। सबक के आखिर में आपकी ख़ुद की जांच के लिए चंद जुमले दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको ये तय करना है कि आपने क्या सीखा या क्या नहीं। इस नज़म को लहन से पढ़ सकते हैं, इसका खुलासा अपने अल्फाज में लिख सकते हैं या मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कलाम को नसर में तब्दील कर सकते हैं। सबक के आखिर में आपको ख़ुद की जांच करना है बच्चों, क्या ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ के तहत इस हमद को लहन से पढ़ सकते हैं या नहीं। इस तरीके से आपको ख़ुद की जांच करनी है। तो प्यारे तालिब इल्मों, ये था हमारा आज का सबक खुदा की शान जो हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप 2-3 मरतबा और पढ़िए और बच्चों तमाम इस्तेदादों को करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। Hello children, how are you all? I hope you are all doing good. Welcome to another session of digital classes. Children, before going to the session, let me ask you some questions. Children, how many of you stay in your house? Your parents, you and your siblings, maybe your brother or sisters. You would like them to listen to you, right? If you have elder brothers and sisters, then you fight with them. And the same way, do you have the same opinion of what your parents are telling you? Do you always obey your parents? Very good if you obey your parents. But you always have a difference of opinion with your parents. This was not the same thing when you were small. You always used to obey your parents, but now you have a little bit differences with your elders, maybe brothers or sisters, or even with your parents.
Why? What is the problem going on? Is it the problem in your mind or the problem in your body? Your elder brother and sister or your parents keep on telling you something and you always have a fighting with them. Let it be boys or girls, you always have a difference in opinion, especially in this age. Children, when you were small, you always used to obey your parents. Slowly when you grow up, your mind starts thinking about many things. Your mind is occupied by studies, and then one day you become totally grown up. But what are the different changes occurring in your body when you are very young and now when you are grown up? There are so many changes in between happening in your body. Let it be girls. When they were too small, they always had so much of happiness in them. Slowly when they grow up, there's a lot of confusion, and slowly when they become old, their total body changes. So, in this lesson we will be learning what are the different changes going on in your body once you reach the age of adolescence. So, the name of the lesson is Reaching the Age of Adolescence. What is adolescence, children? The time period which comes between the beginning of the adulthood and the puberty is called as adolescence. Then what is puberty, children? Puberty is the time in life when a boy or a girl becomes sexually mature. You're totally grown up when you reach a stage of puberty, children. So, it is a process that usually happens between the ages of 10 and 14 for the girls and ages of 12 and 16 for the boys. This is the age of puberty. What are the changes occurring? There are physical changes which affect boys and girls, but differently based upon their genders. So, now you all are called as teenagers. So, adolescents are also called as teenagers. After 10 years, 11 to 19 years, the child is between 11 to 19 years, they all are called as teenagers or adolescents. So, I was asking you some questions. You all are of different moods. Sometimes you like to obey your elders and sometimes you are totally confused. So, this is all due to the different chemicals which are disturbing your body. What are those chemicals called as? They are called as hormones, which bring different changes in your body. So, teenagers are mostly moody. So, let us see why are the teens so moody. Children, in this adolescence period, the body undergoes a lot of changes due to the reproductive maturity. So, it starts from the age of 11, I was telling you, and it ends till the age of 19, so teenage. This period of adolescence is different from one person to another person. The period of life when the body undergoes changes, it brings out a maturity in the reproductive organs, and now the child totally develops into an adult. Now, let us learn what is puberty. It is a period every human body has to undergo. It brings out some changes in the body. The reproductive organs change and it leads to sexual maturity. The very important change that occurs in the boys and girls is the development of the reproductive organs. Now, they become capable of reproduction. Now, in girls, puberty begins 1 or 2 years early than the boys. What are the changes occurring in the body, children?
Every individual has different changes going on in their body. Children, these changes are different from one person to another person. Then what are the changes physically you can see in a boy or a girl? You might have seen that last year you were not so tall, but now this year your height has increased, body has changed. In some boys, the voice also changes. There are so many changes going on, not only in the girls, even in the boys. So always you are in a confused state because you don't know what are the changes going on in the body. You don't know the reason behind the change that occur in your body. These all changes are occurring due to the development of sex organs in your body. The mental, intellectual and the emotional maturity takes place in this age. You should be very much balanced so that you will not get confused. The reproductive health should be really taken care in this age. The physical and the mental balance should be done. That is very important for every individual's health. Children, during adolescence, the reproductive organs, they start developing and become functional. So, the reproductive health and their growth should be managed. Secondary sexual characters keep changing in a girl's body and in a boy's body. Let us see this picture. See this girl when she was 7 to 8 years old. See, she is so small, and as she grows up, you can see the body keeps changing, and now she is totally grown up. There are many changes occurring in the body. You can see the picture. Now, this is a picture of a boy. He is very young, and when he comes to the adolescence age, he develops mustaches, he develops different changes in his body. So, these are the external changes which you are able to see. There are internal changes also going on in the body. Let us see what are they. Children, a boy and a girl are totally different externally and internally. Now, in this picture you can see this is the neck of a boy or a man, I should say. You can see protruding larynx. Protruding means it has grown outwardly. So, this part is called as Adam's apple. Here also in this picture you can see this is the neck region, you can see this is the beard, this is the shoulder. So, in between the neck you can see the larynx has protruded out near the throat. This part is called as Adam's apple. Children, this development is due to the chemicals, as I told you. What are they called as? Hormones. So, the larynx has become more prominent. You can see the development mainly in this puberty. Now, due to this, the vocal cord becomes thicker and longer, and that is why at this stage the voice becomes harsh. And in female, can you see this? No. So, the larynx is small in female, and that is why there is no much change in the size of the Adam's apple. Therefore, the girls have high pitch when compared to the boys. The boys have deep voice and a bass voice, whereas girls, they have small larynx, they do not have Adam's apple. The girls have high pitched voice. Now, let us see the secondary sexual characteristics in the girls. The enlargement of breast can be seen, the growth of body hair prominently in the underarm and pubic areas, widening of the hips, the changed fat distribution takes place, more fat is getting deposited under the skin, at the hips, buttocks and the thighs. The development of secondary sexual characters takes place, and mostly the menstruation cycle starts at this age. The cycle of these changes in women takes place every month, and children, this cycle is called as menstrual cycle. When an ovum is unfertilized, the uterus lining sheds off. That means the uterus lining
slowly comes out of the body and it leads to hemorrhage. This is called as menstruation. The first day of bleeding is marked as the first day of menstrual cycle, and the period from one menstrual cycle to another varies from 28 days to 30 days. Children, this is female reproductive system. These are the two ovaries, fallopian tubes. This is the endometrium lining present in the uterus. Children, you can see the endometrium lining is thick, and after some days when the ova is not fertilized, slowly this lining comes out in the form of blood. So, this is a reproductive cycle of females. It begins in the puberty, and the onset of menstrual cycle is called as menarche. The process includes cyclic changes in the ovaries and in the uterus. Children, this cycle mainly depends upon the ovaries. In the ovaries, ova is developed. Now see this reproductive system, children. What are produced in the ovaries? Ova or egg. One single egg is called as ovum. This ovum is produced by the ovary. It develops, matures, and then it is released. The fallopian tube absorb it, and this ovum stays for a particular time in the fallopian tube. It waits for the sperm to fertilize it. But if the ovum is not fertilized, it reaches the uterus. So, in the uterus you can see there is a thick spongy inner lining. It develops anticipating the pregnancy. That means here this uterus makes itself ready for the fertilization of the ovum. If the egg is fertilized in the fallopian tube, then the fertilized embryo reaches here. But if the fertilization does not take place, then the released egg and the thickened lining of the uterus along with the blood vessels are shed off. This causes bleeding in the woman. It is called as menstruation. This happens till the lady reaches the age of 45 or 52. Afterwards, the menstrual cycle stops. That means a lady can reproduce only up to an age of 45 to 52, only till she has a good menstrual cycle. If the menstrual cycle is active, then only she can reproduce. The stopping of the menstrual cycle is called as menopause. Children, the years between the menarche and the menopause are marked as the reproductive age of woman, where she is able to bear a child. Now see this cycle, children. This is a menstruation cycle. Children, 1, 2, 3, 4, 5. What is happening in these 5 days? The uterine lining breaks down and the menstruation occurs. Now from 6 to 10 days, slowly again the uterus get back to its own work. What is its work? Thickening of the uterus. Endometrium lining becomes thicker, and 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 days, the uterus waits for the ovum to reach. That means ovulation occurs. The ovary produces ova. The egg reaches the fallopian tube, and from there it reaches the uterus. And now slowly from 24 to 28 days, the uterine lining continues to thicken, and now it knows that the fertilized egg is not going to reach it, and that is why it sheds off, and slowly the blood comes out. This is called as menstrual cycle. Children, let us see what are the phases of menstrual cycle. The first phase is menstrual phase. Day 1, the uterus lining, which is prepared for implantation, starts to shed off, which lasts for 3 to 5 days. So, day 1 to day 5 is the menstrual phase. Follicular phase, a matured egg. Follicle releases an egg from one of the ovaries. The uterus starts preparing for another pregnancy. The third phase is ovulatory phase. The mid-cycle phase,
This is the phase in which the ovulation takes place, that is the day from 13th to 17th day. The end of the follicular phase along with the ovulation period defines the fertilization period. Here the ovum waits for the sperm to reach the fallopian tube and it waits for fertilization. Then the last phase is luteal phase. The post-ovulation phase where the fate of the corpus luteum is decided. If fertilization occurs, the pregnancy starts. If fertilization does not occur, it marks the onset of another cycle. So, slowly the uterus sheds off its blood vessels and the blood is given out. Now, let us come to the next topic of the lesson, the endocrine system. As I was telling you, the different changes in your body are taking place because of the different chemicals present in your body. Children, what are these chemicals? Where are they coming from? Why are they disturbing our body? These are all the different questions we get in our mind, right? As we know that we have different systems working in our body. Some systems are called as exocrine systems and some systems are called as endocrine systems. Exocrine systems means they have a very important function of releasing some secretions which are directly given out in the blood vessels. They have ducts like liver, it gives out bile juice, it has a bile duct in which the secretions are done. Children, we have some organs called as endocrine systems. They do not have any ducts, that means they do not have any canal system and so they secrete some chemicals called as hormones. These hormones are released directly into the blood. So, they are mixed up in the blood directly. So, endocrine glands do not have duct, so they are called as ductless glands. Endocrine systems are present in our body. Mainly the very important gland present is within the brain, that is the pituitary gland. It is called as master of all the glands. Now, let us see where are they placed in our body. Children, these endocrine systems are present both in the male body and in the female body. The very important pituitary gland is present in the brain. Thyroid gland is present on the throat. It is a butterfly shaped gland. Then parathyroid gland is present behind the thyroid gland. Children, we have adrenal gland present above the kidneys like a crown on the kidneys. We have pancreas near the stomach and testes in the male and 2 ovaries in the females. So, these are all the different endocrine systems which play a very important role by secreting chemicals called as hormones. So, what are endocrine glands? They are ductless glands because they do not have any particular canals. They regulate body processes and they help in the systematic functioning of the human body by secreting some chemical substances called as hormones. They are also called as chemical messengers. These hormones are the chemicals which are responsible for the different changes taking place in your body. They change the physiological and the different behavior of your body. Like in females, we have ovaries. The chemical which is sex hormone which is released by ovary is estrogen. And in males, the sex hormone produced by the testis is testosterone. Children, let us start with the different endocrine glands present in our body. The first one is the pituitary gland. This is the pituitary gland which is present near the brain, very minute, but it is called as the master endocrine gland. It releases different hormones like ACTH, TSH, LH, FSH. The other hormones secreted by pituitary glands are prolactin. It helps in the development of the breast, growth hormone. Children, this is a very important hormone. This hormone is responsible for the change in your height of the body. ADH, antidiuretic hormone. This helps in the control of the body blood fluid. Oxytocin, it helps in the
uterus and the breast contractions during the pregnancy. See children, this pituitary gland produces so many hormones, and that is why it is called as master gland, master endocrine gland. ADH in the functioning of kidney, oxytocin in the reproductive organs, and the breast, TSH in the functioning of the thyroid gland, ACTH in the proper functioning of the adrenal gland, prolactin in the functioning of the breast. Children, growth hormones in the development of the bones, FSH and LH in the proper functioning of the reproductive organs. Like this pituitary gland helps in the proper functioning of the different endocrine glands. Children, it produces different hormones which help in the proper functioning of the other endocrine glands. Now, the next endocrine gland is thyroid. You can see this is the throat. So, on either side of the trachea, you can find butterfly shaped thyroid. This is the thyroid gland, children. It is a butterfly shaped gland, children. It is situated in the throat. It secretes a hormone called as thyroxine. This hormone maintains the balance of the metabolic activities. Children, if the thyroid is not working properly, then the secretion of thyroxine will not take place properly. It leads to the deficiency of this hormone, which will lead to the swelling of the thyroid gland, and it produces a goiter, simple goiter. That means, children, here the throat, it has thyroid gland. So, if your thyroid gland is not functioning properly, there is a swelling taken place, and this leads to goiter, simple goiter. You might have seen in some people. In ladies, actually Adam's apple is absent, but they have swollen throat. This is because the thyroid gland is not functioning properly, because the pituitary gland is not producing TSH properly, and so the thyroid is not getting stimulated, and thus it starts swelling. Thyroid does not produce thyroxine properly, and that is why simple goiter takes place. Children, now let us come to the next endocrine gland, that is pancreas. It is situated near the stomach. It has two different cells, alpha cells and beta cells. Beta cells produce insulin. Children, alpha cells produce glucagon. These two hormones are very much responsible for the proper functioning of the body, because if the deficiency of insulin takes place, then it leads to a disease called as diabetes. The next endocrine gland is adrenal gland. The adrenal glands are situated on the kidneys. Now, see, this is adrenal gland. Children, these adrenal glands are present like a crown on the kidneys. They are situated right above it, and they keep changing their shape whole age. They keep shrinking as a person grows older. They secrete a hormone called as adrenaline. They maintain pH balance and salt in our body. The hormone is also called as fight and flight hormone. It is released at the emergency situations, and that is why this adrenaline is also called as fight and flight hormone. Now, the next endocrine gland present in the male bodies is testis. The testosterone is a primary male sex hormone. It is responsible for the development of the male reproductive systems. That means the testis produces sperms, and if the sperms are not produced properly, then the reproduction does not take place. So, testosterone helps in the different changes in the body also, mainly during puberty stage. Now, this is the female reproductive system. These are the ovaries, children. These ovaries, they produce a hormone called as estrogen. It is the primary female sex hormone. It is responsible for the development of the female reproductive organs. It is responsible for the development of the ova. Ova means egg. So, the development of the sexual characteristics also is done by the estrogen hormone. That means the menstrual cycle is also taken care by estrogen. So, children, we have studied about the different endocrine glands and their functions, and we have seen that these hormones are responsible for the proper functioning and the development of your body. So, the very important thing what you have to take care is personal hygiene. Children, it is very important, mainly in the teenagers. Children, you keep on sweating because
continuously play. So because of that, your body starts smelling, and that is why you have to wash your body parts frequently. And your face also, because of sweating, it leads to the development of acne. Because of the secretions of sebaceous glands and sweat gland, the different bacteria reaches your face and it leads to the acne formation. So you have to frequently wash your face and hands and legs. All the body parts should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained, there are chances of bacterial and fungal infections. You also have to take care of your health and diet. You should always eat a balanced diet so that you get proper nutrition for the body and your organs also work properly. So, as adolescence is nothing but the sudden development and growth of your body, it requires all the nutrients, children. So, all the teenagers should have a proper and a balanced diet. Most of you like to eat junk food, which is very much harmful for your body, because already you have lot of fat releasing by your body, and that is why if you eat junk food continuously, more amount of fat gets stored or accumulated under your skin. So, mainly in this teenage, you have to avoid junk food. A balanced diet is a meal that includes proteins, carbohydrates, fats and vitamins in equal proportions. So, this has to be taken daily, like cereals, legumes, roots, tubers. You have to take a lot of fruits and vegetables in your daily diet. Please avoid junk food, or else you can see development of pimples or acne on your body. And the very important thing you have to follow is always keep your body healthy by regular exercise. Exercise ensures a healthy body and a healthy mind. Walking, playing, practicing yoga, these are the many ways you can carry on to keep your physical body active. Children, in this lesson, we have learnt about the different changes taking place in a human body. Let it be a boy's body or a girl's body. We have seen that the endocrine glands secrete hormones. The pituitary gland is called as the master gland. The different hormones released by pituitary glands controls the different endocrine glands. Children, we have also seen that taking a balanced diet and a good physical exercise will keep you healthy. You always have to maintain good hygiene. So, I hope you have understood the lesson, children. For in a better way, you please read the textbook and then answer these questions. How is adolescence different from childhood? Write a short notes on Adam's apple. Why acne and pimples are common in adolescence? Write 5 suggestions to improve the performance of the endocrine glands. Children, I hope you have understood the lesson. For better understanding and good practice, please download the worksheets from SCERT website. Okay, children, see you in another session of digital classes. Thank you. Hello children, welcome to Social Studies digital class. How are you all? Yes, I hope you are all fine. Are you all curious to listen to the class today? Let us, before that, recall what you have discussed in the previous class. In the previous class, you have discussed about
the forest, using and protecting the forest. Children, you have learnt that forests are important part of our life. They should be protected and they should be planted more so that it will be useful for the human race for the development and growth aspects. Children, forests grow on the surface of the soil and they are very useful. Similarly, there are also some natural resources which grow deep inside the soil and which are immensely useful to us. They are useful for the human race for the growth and development. What are those? Can you guess, children? Yes, they are minerals. So today you are going to learn about the minerals and mining. Children, let us try to understand what are minerals and mining. Before that, let us recall what are you going to learn in this class. Minerals in our houses, renewable and non-renewable resources. Some important mineral resources and their uses. Minerals in Telangana, mining the minerals and to whom do the minerals belong. Children, now you must be thinking, what are the minerals? Is it not? Yes. So, let us go for some of the slides which make you to understand what are the minerals. So, watch these pictures carefully, children. You must have seen the walls of the houses being built with the bricks. Is it not? You must have also seen sand and mud. Even clay, cement also utilized for the construction of the houses. You might have also seen the whitewashing of the house using the white lime. Is it not, children? Children, you might have observed the floor being paved with the Kadapa stones or granite. You might have also seen the granite stones used for the pillars, construction of the pillars. Children, there are certain objects which are made up of the aluminium, iron, copper, lead. So many things such as utensils, and there are number of articles made up of iron such as the almaras, the boards, the furniture and so on. We also can see the electrical equipment made up of copper, and lead is being used for pigmentation and even for it is used for the car battery also. Children, you also might be wearing the ornaments made up of gold and silver. Isn't it, children? Yes. And we use petrol and diesel for the purpose of transportation to move from one place to another place. And even we use kerosene for the domestic purposes. Children, we use coal, gas and kerosene for transportation and domestic purpose. See the coal here. Yes. How is it? It is black. Yes. And here is the gas. And we also use kerosene sometimes for cooking in the rural areas. Children, we also use the underground water for the farming purpose and also for the domestic use. Farmers generally go for agriculture and they draw out the water from underground, and also they go for the people generally use the water for the domestic use. Children, now you must be confused. What are these? Even the groundwater is also the mineral. So let us understand the definition of the minerals. So what are minerals? Anything which obtains naturally from under the earth, which is not in the form of plants or animals. They are called as minerals. So anything that obtains naturally
and which is from the earth, down under the earth, and which is not the form of the plant and animal. Such things, such objects can be called as minerals. So, examples of minerals, just also before this we have discussed, are mud, sand, limestone, kadapa stone or granites, iron, copper, lead, chrome, aluminium, gold, silver, petrol, diesel, kerosene, coal, gas, groundwater, which we obtain from the bore wells, is also a mineral itself. Children, now let us discuss the kinds of minerals. Minerals are of two kinds. They are the metallic minerals and non-metallic minerals. Do you know what are the differences between the metallic minerals and non-metallic minerals? Metallic minerals are composed of one or two or more than that the metallic elements, and they are present in the raw form and obtained from the ores. Means in one single mineral there are two or more than two metallic elements are present, and these minerals are also shining. For example, you can take iron, copper, gold, and even you take the example of silver, which is also shining, and even they are good conductor of electricity. Whereas non-metallic minerals, they are procured from rocks and minerals. Again, we cannot extract anything from the non-metallic minerals. They do not contain any metal substances and they even don't shine. Examples of such non-metallic minerals are mica, coal, limestone, etc. Children, I hope you have understood the difference between the metallic and non-metallic minerals. So, here is a small activity for you. Classify the following minerals into metallic and non-metallic and energy resource. What is energy resource? Such as petrol, kerosene and gas. Those all comes under the energy resources. So, let us discuss and try to answer this and differentiate the metallic and non-metallic minerals. What is iron ore? Iron ore is a metallic mineral. Yes. And bauxite. Bauxite is aluminium ore. So, what is that? It is also a metallic mineral. And then next coal. Coal is non-metallic as well as energy source. It is not only the non-metallic mineral but also it is an energy source also. What is limestone, children? Yes, it is non-metallic. And then gypsum also is non-metallic mineral. Mica is also non-metallic mineral. Petroleum. What is petroleum, children? It is energy source. And sand. Sand is non-metallic mineral. So, I hope you have understood in a better way the difference between the metallic and non-metallic minerals. So, let us go for the next topic. Kinds of resources. There are two different kinds of resources, children. They are renewable resources and non-renewable resources. What are renewable resources? The renewable resources are those resources which can be regenerated again and again. Okay, for example, wood. So, how we can regenerate wood? Suppose, for example, before that, if you cut a tree and if you plant another tree, there is a hope that you will be getting the same amount of wood which you have cut now after some years. That is, wood is getting regenerated. Whereas non-renewable resources, the resources which cannot be regenerated back, those are called as non-renewable resources. For example, rock. Suppose if you outcrop the rock and if you for the granite purposes, for construction purposes, you have outcropped the rock. Can you get back the same amount of the rock again? No, it is not possible. It means that it is a non-renewable resource. Children,
You have understood the difference between renewable resources and non-renewable resources? Okay. Here is a small activity which you need to do. So, classify the following natural objects into renewable and non-renewable resources. Coal, bamboo, seawater, marble, iron ore and diamond. So, let us go for understanding this renewable resources. What are renewable resources and what are non-renewable resources among this? Coal. Yes, it is non-renewable resource. Bamboo. It is renewable resource. Seawater. It is a renewable resource. Do you remember water cycle, children? Yes. So, water, it is getting evaporated, getting condensed, the precipitation aspect will take place and again it returns in the form of rain. So, water, seawater is definitely a renewable resource. Marble is non-renewable, you cannot get back the marble again. Iron ore is also non-renewable and diamonds, if you take out the diamonds from the diamond mines, you cannot get the diamonds back. Is it not, children? Yes. So, this also comes under the non-renewable resource. Shall we go to the next? Yes. Now, let us study some of the important minerals and their uses such as iron, mica, limestone, manganese, barytes and feldspar. So, each one we will discuss in detail. Iron ore. What is iron ore? We have discussed it is a metallic mineral. In our state, we get hematite and magnetite iron ore deposits. And it is used in steel industry, pelletization, sponge iron and pig iron industries. It is also exported to Japan. Children, now let us study about mica. Mica is a shiny mineral. You can see the picture here. Is it not shining? Yes. It is extensively used in electrical and electronic industries. It has many properties which makes it useful. It comes in thin layers and it is a non-conductor of electricity. Means electricity cannot pass through mica easily. Yes, children. Now let us go for the next topic, that is next mineral, limestone. Limestone is used in cement, carbide, iron and steel industries, soda ash, chemical, sugar, paper industry, fertilizer industries and glass industries. You can see the picture of limestone here. Children, let us study about the granite. It is used for in cutting and polishing industry, decorative panels, monuments, making up of the monuments and flooring panels also. You can see the granite stone over here. Children, now let us study about manganese. You can see the picture of manganese here. Yes. So, it is used in potassium permanganate, ferroalloys, iron and steel, batteries, chemicals, ceramic and glass industries. Children, now let us study about barytes. This is a group of ores from which an element called barium is extracted. Barium is used for industrial and medical purposes. Barytes is also used in drilling deep holes, petroleum and natural gas. Means barytes is used for digging deep holes also. In digging the holes, it is used. Children, now let us study about feldspar. It is one of the raw material which is used in making the glass and ceramic ware, such as you might have seen the wash basins in our homes, children. So, for making the wash basin and similar type of equipment, this feldspar is utilized for. Children, now let us study about the mineral resources of
Telangana. What are the different minerals which are present in Telangana and how it makes Telangana a rich state? Telangana is a house of various minerals, especially coal, iron, iron ore, limestone, dolomite, manganese, quartz, feldspar, clays, barytes, uranium, black and color granites, marbles, etc. So we are equipped with so many minerals. Is it not, children? Yes. See, Telangana is bestowed with so many minerals. Let us study about each mineral, such as we have barytes, coal, granite, iron ore, limestone and mica. About each of the mineral in separate maps of Telangana. Let us first study about iron ore deposits. Telangana is endowed with number of scattered medium grade iron ore deposits in Bayaram forest and float iron deposits in revenue and patta lands of Mahbubabad district and low grade iron ore deposits in Peddapalli and Manchiryal district. See here, children, in the map of Telangana we can locate all these places. Here is Mahbubabad, where in Bayaram forest the float iron as well as the medium grade iron ore, scattered iron ore deposits are present. And even there are iron ore deposits of low grade, scattered low grade iron ore deposits in Peddapalli and also in Manchiryal district. We also can find the iron ore deposits in other places such as in Nizamabad and in Khammam. Children, now let us go for the next mineral. Limestone deposit. So, vast limestone deposits are being mined by cement industry in Nalgonda, Vikarabad, Peddapalli and Manchiryal district. Locate all these places in the map of Telangana. See, Tandur blue limestone is very famous. It is also called as Shabat stone, which is found in Vikarabad. The limestone deposits are found in Nalgonda district. About Tandur blue limestone is found in Vikarabad district. Limestone deposits are also found in Peddapalli, Manchiryal district, Warangal rural, Bhadradri Kottagudem, Mahbub Nagar district and in Adilabad district. So, in all these places we can find huge limestone deposits. Children, now let us go for the other mineral, the granite deposits. The tan brown granite deposits are found in Karimnagar district, which is unique. Unique in the sense special, nowhere it is found. So, and they are being exported on a large scale by the private sector. And depending upon the proportion of reddish brown color of the marble, they are also being exported to countries, foreign countries, that is to China and even in South Asian countries. So, let us locate these places in the map of Telangana. See here, children, this is Karimnagar, where the tan brown granite deposits are found, and even in Nizamabad, Yadadri Bhuvanagiri, Sangareddy, Vikarabad and Jayashankar Bhupalpalli district and Bhadradri Kottagudem. In all these places the granite deposits are there, but more specially in Karimnagar district the tan brown granite deposits are more famous and they are even being exported to other countries also. Children, about uranium, let us discuss now. It is found in Nalgonda district only. Uranium deposits are found at Lambapur, Pulicharla, Nammapuram and Yellampuram in Nalgonda district. Here it is found. Children, now let us learn about coal deposits. Telangana is the only state in the entire South India that contains vast deposits of coal and is being mined by
Singareni Collieries Company Limited. So coal deposits are very important. At the same time, it is our state is the only state in the entire South India which is having vast coal deposits, and they are mined by Singareni Collieries Company. Let us locate all these coal deposits in the map of Telangana. Children, coal deposits are found in Adilabad district, Jagatiyal district, Jayashankar Bhupalpalli district, and also in Bhadradri Kottagudem district. Children, now let us study about how the minerals are mined. What is mining, children? Extracting or digging the soil from deep inside and extraction of the minerals from deep inside the soil. It is called as mining. So let us understand how the mining is done. Mining the minerals, there are two methods how the mining or extraction of the minerals is done. They are open cast mining and underground mining. What is open cast mining and underground mining? Let us understand. If a large pit is made and minerals are extracted, it is called as open cast mining. So there is no hole dug or deep inside they will not go, but they will just dig a large pit and they will extract the minerals in that large pit only. Such mining is called as open cast mining. So after it is done, they will blast the rocks and they will remove the minerals from those rocks. They will blasts are made and minerals are removed from the rocks. See here, you can see an open pit here and they have dug the open pit, is it not? And from where the minerals will be extracted. This is how open cast mining is done, children. Children, now let us understand what is underground mining. When underground tunnels are built to mine minerals that lie deep inside the soil, it is called as underground mining. As I said, they will make the hole on the earth and they will go deep inside using along with the pipes, and till where they will reach up to the place where the minerals are located. So in such a way, if underground tunnels are dug, that kind of mining, it is called as underground mining. So you can see the picture here, underground mining. So just how we dig, you must be knowing how the bore wells are dug, children. Yes, how the bore wells are dug, there will be a hole, they will dug and deep inside the pipes will go. Is it not? So they will dig the bore well. Similarly, in the same way, the mining also is done under the underground mining. So in the Bombay High, underground mining is done to extract the crude petroleum near Mumbai. This is the picture of Bombay High. It is the only place where in India petroleum is extracted, and this place is located near Mumbai, from where the petroleum is extracted. Children, I hope you have understood the open cast mining and under cast mining in a better way. Now let us go for the next concept. Now let us study about the advantages and disadvantages of mining. What are the advantages, benefits of mining? Is it not? And what are the disadvantages? That is, what are the problems after if we undergo for the mining? So let us study them in detail. Advantages of mining. So mining is very important for the growth and development of human race. Imagine life without minerals. We have so many minerals around us. We have iron, we have copper, we have silver, we have gold, we have mica, limestone. So many minerals are there around us. And for the transportation industry also, which is the basic for the development, it is also there because of the minerals. So we cannot imagine development, we cannot imagine growth without the minerals. So they are very, very important. And it also gives employment to nearly 10 lakh people in India and over 1 lakh people in Telangana. So it is also creating the employment opportunities to the people.
So now let us discuss the disadvantages of mining. Disadvantages such as it disturbs the surface area. It gives a lot of disturbance. Entire region has to be dug, and if even any villages are there or people, residential places are there, they have to be evacuated because of the mining being undertaken by the officers. It results in the cutting of the forest, destroying fields and inhabitations, that is the residing of the people. People will be living in that particular place. It also creates pits and mounds, which causes a lot of damage. It needs a lot of water to wash the minerals, which results in polluting the nearby water resources such as rivers. So it needs a lot of water, means if any river is going from that place, so if they are washing those minerals in that particular water, it leads to the pollution of that river. The land becomes useless for other purposes such as farming. Once the mining has been started in a particular area, that land becomes completely useless for the farming purpose. People who live in the nearby areas, that is the people who are residing to these mines, also face a lot of problems. Children, the work of the miners is also hazardous. What is hazardous? It is dangerous, as they are constantly exposed to accidents, and apart from that, they also inhale the poisonous substances from the mines, so which cause long-term health damages. There is a disease called black lung disease, so which occurs to the miners. So these are all the disadvantages of the mineral extraction, that is mining. So let us go for the next concept. To whom do the minerals belong? Children, you must be thinking that the minerals are located deep inside the soil, is it not? Then who are the owners of these minerals? Can you guess who are the owners of these minerals? Yes, people who are living in that particular state, country, or in that area. To those people the minerals belong to. Yes, minerals belong to the people of the country. So they should be used for the interest of the people, that is they should be utilized for the benefit of the people. So with this we have come to the end of the session, children. Let us go for the evaluation part. Evaluation. You have to read the textbook carefully, children, and also discuss with your friends and try to answer these questions. What are renewable and non-renewable minerals? Give some examples. The second question is, locate the following on the map of Telangana. Coal deposits in Telangana, iron ore deposits in Telangana, limestone deposits in Telangana. The third question is, what is open cast mining and underground mining? Identify the minerals found in your district and write few sentences about them. The fifth question is, how are minerals helpful to us in our daily life? So I hope you are going to find the answers for these questions, children. Okay, so and also that you have understood the lesson in a more better way. Is it not, children? You have understood the lesson? Okay, even you can go through the textbook and for better understanding of the concept, solve the worksheets. Visit the site of SEERT for worksheets. See you in the next session, children. Until then, thank you.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات اور ناظرین، جماعت نہم کے اس ڈیجیٹل لیسن میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پیارے بچوں، اس سے پہلے کے 2 ڈیجیٹل لیسن میں آپ لوگ کثیر رکنیہ اور اجزائے ضربی پر معلومات حاصل کیے ہیں، جس میں کثیر رکنی کسے کہتے ہیں، متغیر کیا ہے، مستقل رکن کیا ہے، اور کثیر رکنی کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور درجے کے لحاظ سے کثیر رکنی کے اقسام کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہیں. اور کثیر رکنی کا صفر کیا ہوتا ہے، کثیر رکنی کا صفر کس طرح معلوم کیا جاتا ہے سیکھے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگ ایک کثیر رکنی سے دوسری کثیر رکنی کو تقسیم کرنے کا طریقہ بھی سیکھے ہیں. مسئلے باقی کے استعمال سے آپ لوگ ایک کثیر رکنی کو دوسری کثیر رکنی سے تقسیم کرنے پر باقی کیا ہوتا ہے، یعنی باقی کیسے معلوم کیا جاتا ہے سیکھے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جزء ضربی کے مسئلے کے استعمال سے کثیر رکنی کے اجزائے ضربی معلوم کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان لے کر آج حاضر ہوا ہوں جو الجبری متماثلات ہے، یعنی نیا عنوان الجبری متماثلات ہے، الجبرک آئیڈینٹیٹیز. عزیز بچوں، اگر آپ ان الجبری متماثلات کو اچھی طرح سمجھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاضی کے باقی عنوانات کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی. آئیے آج کی اس ڈیجیٹل کلاس کی شروعات ریاضی پر ایک قول کے ذریعے کریں گے. پیارے بچوں، the essence of the mathematics is not to make simple things complicated but to make complicated things simple. ریاضی کا نچوڑ آسان چیزوں کو پیچیدہ بنانا نہیں ہے، یعنی ریاضی کی روح، ریاضی کا نچوڑ آسان چیزوں کو پیچیدہ بنانا نہیں ہے بلکہ پیچیدہ چیزوں کو آسان بنانا ہے. یعنی ریاضی آسان چیزوں کو پیچیدہ نہیں بناتی بلکہ پیچیدہ چیزوں کو آسان بناتی ہے. عزیز بچوں، آئیے ان الجبری متماثلات کو ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، جماعت ہشتم میں آپ لوگ چند الجبری متماثلات کو ضرب کے طریقے سے اخذ کرنا سیکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جیومیٹریائی ثبوت بھی سیکھے ہیں. تو آئیے اس پر ہم اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ متماثلہ کیا ہے. کسی مساوات کو اس وقت متماثلہ کہیں گے جبکہ اس کی قیمت اس کے متغیرات کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہو. آئیے مساوات پر غور کریں. ایکس اور وائی کی کسی بھی قیمت کے لیے مساوات کے دونوں جانب کی قیمتیں محسوب کیجیے. پیارے بچوں، ایکس جمع وائی مساوی وائی جمع ایکس مساوات میں 2 متغیرات کی قیمتیں ایل ایچ ایس اور آر ایچ ایس میں معلوم کریں. ایکس اور وائی کی قیمتیں، ایکس مساوی 1 وائی مساوی 2. ایل ایچ ایس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ ایکس جمع وائی مساوی ہے، ایکس کی قیمت 1 جمع 2 مساوی ہے 3. اسی طرح سے آر ایچ ایس میں وائی جمع ایکس مساوی وائی کی قیمت 2 جمع 1 مساوی ہے 3. یہاں بھی 3 آ گیا ہے، یہاں بھی 3 آ گیا ہے. تو کیا ہوا؟ ایل ایچ ایس کی قیمت مساوی ہے آر ایچ ایس کی قیمت، نتیجہ آیا ہمارے پاس. اسی طرح سے ایکس مساوی ہے 2 وائی مساوی ہے 3 درج کرنے پر ایکس جمع وائی مساوی ہے 2 جمع 3 مساوی 5 ہوگا. اسی طرح سے وائی جمع ایکس مساوی 3 جمع 2 مساوی 5 ہوگا. یہاں دونوں جانب 5 آ گیا ہے تو یہاں بھی ایل ایچ ایس مساوی ہے آر ایچ ایس. یہاں ایکس مساوی -1 وائی مساوی -3 لینے پر ایکس جمع وائی مساوی -1 جمع -3 مساوی ہے -4. رائٹ ہینڈ سائڈ والا وائی جمع ایکس مساوی ہے -3 جمع -1 مساوی ہے -4. یہاں بھی ایل ایچ ایس مساوی آر ایچ ایس آ گیا ہے. عزیز بچوں، اس مساوات میں آپ کون سی بھی قیمت درج کیجئے،
LHS اور RHS کی قدر مساوی آئے گی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مساوات x اور y کی کسی بھی قیمت کے لیے صحیح ہے. یعنی x اور y کی مختلف کون سی بھی قیمتیں اگر ہم درج کر دیے تو یہ مساوات صحیح ہے. لہٰذا اس مساوات کو متماثلہ کہتے ہیں. پیارے بچوں، مساوات میں موجود متغیرات کی کسی بھی قیمت کے لیے اگر مساوات درست ہے، صحیح ہے، تو تب ہی وہ متماثلہ کہلاتی ہے. آئیے ایک اور مثال پر ہم غور کریں. پیارے بچوں، x ضرب x جمع 1 مساوی ہے 6. یہاں پر بھی ہم LHS اور RHS کی قیمتیں معلوم کر کے دیکھیں گے. یہ x ایک ہی متغیر ہے. x کی قیمتیں لے رہا ہوں میں. پہلے x مساوی ہے 1. LHS میں کیا ہے ہمارے پاس؟ x ضرب x جمع 1. x ضرب x جمع 1. یہاں x کی قیمت کیا درج کرنا ہوگا؟ جو قیمت ہم لیے ہیں وہ درج کریں گے. x کی قیمت 1 ضرب 1 جمع 1. یہ 1 جمع 1 2. 2 ضرب 1 کیا ہوگا؟ 2. لیکن RHS میں دیکھیے آپ 6 ہے. کیا یہ LHS اور RHS کی قیمتیں مساوی ہیں؟ نہیں. تو یہاں کیا لکھنا ہوگا مجھے؟ LHS مساوی نہیں ہے RHS کے. اسی طرح سے 2 درج کر کے دیکھ رہا ہوں میں. x مساوی 2. x ضرب x جمع 1 میں درج کرنے پر x کی قیمت 2 ضرب 2 جمع 1. 2 جمع 1 کیا؟ 3. 3 دوگنی 6. RHS میں بھی 6 ہے. تو لہذا کیا ہوگا؟ LHS مساوی ہے RHS. اسی طرح سے 3 درج کر کے دیکھ رہا ہوں میں. x ضرب x جمع 1 میں مساوی ہے x کے بجائے 3 ضرب 3 جمع 1. 3 اور 1 4. 4 تیا 12. یہ LHS میں 12 آ گیا ہے لیکن RHS میں 6 ہے. تو کیا ہوگا؟ LHS مساوی نہیں ہے RHS کے. ایک اور قیمت درج کر کے دیکھ رہا ہوں میں. یہاں پر x مساوی ہے -3. تو x ضرب x جمع 1 مساوی ہے -3 ضرب -3 جمع 1. -3 پلس 1 ہے. -3 میں سے 1 تفریق کرنے پر -2. -2 ضرب 3. -2 تیا 6. یعنی مائنس ضرب مائنس پلس 6. تو 6 آ گیا. یہاں پر کیا ہوا؟ LHS مساوی ہے RHS. یہاں غور کیجئے بچوں، یعنی بعض قیمتوں پر یہ مساوات درست ہو رہی ہے، بعض قیمتوں پر درست نہیں ہو رہی ہے. کیا یہ متماثلہ ہوگی؟ یقیناً نہیں. یہ مساوات ہے لیکن متماثلہ نہیں ہے. پیارے بچوں، یہ باتیں آپ لوگ جماعت ہشتم میں سیکھے ہیں اور جماعت ہشتم میں چند الجبری متماثلات بھی سیکھے ہیں. یہ مساوات x مساوی 2 اور y مساوی -3 کے لیے تو صحیح ہے لیکن دیگر قیمتوں کے لیے صحیح نہیں ہوگی. یعنی ابھی ہم جو جدول میں دیکھے وہ مساوات x مساوی ہے 2 اور y مساوی 3 کے لیے صحیح ہے لیکن دوسروں کے لیے صحیح نہیں ہوگی. اس لیے اس مساوات کو متماثلہ نہیں کہا جائے گا. کسی مساوات کو اس وقت متماثلہ کہیں گے جب کہ اس کی قیمت اس کے متغیرات کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہو. یعنی متماثلہ کی تعریف ہے. کسی مساوات کو اس وقت متماثلہ کہیں گے جبکہ اس کی قیمت اس کے متغیرات کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہو. ایک مساوات کسی متغیر کی بعض قیمتوں کے لیے تو صحیح ہو سکتی ہے جبکہ ایک متماثلہ متغیرات کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہونی چاہیے. لہذا ایک متماثلہ کو آفاقی اعتبار سے صحیح مساوات کہا جاتا ہے. متماثلہ کی علامت کے طور پر یہ جو براکٹ میں جو علامت دیکھ رہے ہیں وہ متماثلہ کی علامت استعمال کرتے ہیں. اس علامت کو ہر طرح سے مساوی ہے پڑھا جاتا ہے. پیارے بچوں، آپ لوگ جماعت ہشتم میں جو الجبری متماثلات سیکھے ہیں اور ان الجبری متماثلات کے استعمال سے چند سوالات حل کیے ہیں، آئیے ان کا اعادہ کرتے ہوئے ہم آج کی کلاس کے لیے آگے بڑھیں گے. x جمع y کی دوسری متماثل ہے x کی دوسری جمع 2xy جمع y کی دوسری. یہ دوسری متماثلہ x مائنس y کی دوسری متماثل ہے یا مساوی ہے x اسکوائر مائنس 2xy جمع y کی دوسری. یہ تیسری متماثلہ ہے x جمع y ضرب x مائنس y مساوی ہے x کی دوسری مائنس y کی دوسری. یہ چوتھی متماثلات جو جماعت ہشتم میں آپ لوگ
सीखे थे x जमा a ज़रब x जमा b मसावी है x की दूसरी जमा a जमा bx जमा a ज़रब b। प्यारे बच्चों, ये मुतमासिलात जो जमात हश्तों में आप लोग सीखे हैं, इनको ज़रब के तरीक़े से मालूम किए हैं। आइए अब हम अलजबरी सबूत को गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए मुशाहिदा करते हैं। मुतमासिला x जमा y की दूसरी मसावी है x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी की ज्योमेट्री के तरीक़े से तस्दीक। अजीज़ बच्चों, ये एक मुरब्बा है, इसका एक ज़िला फ़र्ज़ करो x है, तो जब एक ज़िला x होगा तो दूसरा ज़िला भी x होगा, तब इसका रकबा क्या होगा? मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता बखूबी जानते हैं, ज़िले की दूसरी, जब x होगा तो इसका रकबा भी x की दूसरी होगा। एक ख़त आगे खींची गई है, फ़र्ज़ करो इसका तूल y है, इसी तरह से नीचे भी एक ख़त खींची गई है, इसका तूल भी y है, ने दोनों मसावी तूल लिए। तो यहाँ अगर एक मुस्ततिल में लगा दिया तो क्या होगा? यहाँ एक मुस्ततिल आने पर ये इसका अर्ज़ y और तूल x है, तो इसका रकबा क्या होगा? x ज़रब y, यानी xy। इसी तरह से यहाँ पर एक मुस्ततिल आ गई है, इसका भी अर्ज़ y और तूल x होगा, तब इसका रकबा क्या होगा? x ज़रब y। अब यहाँ एक खाली जगह बची हुई है हमारे पास, तो ये अगर मैं एक मुरब्बा लगा दिया तो क्या हुआ? इसका ये ज़िला भी y और ये भी y है, तब इसका रकबा क्या होगा? ज़िले की दूसरी। तो आइए बच्चों, अब ये क्या हुआ? देखिए पूरा मुकम्मिल यहाँ से यहाँ तक x जमा y होगा, इसी तरह से नीचे भी x जमा y होगा। तो आप गौर कीजिए, यहाँ ऊपर भी x जमा y, x जमा y, x जमा y, x जमा y, तब ये कंप्लीट मुरब्बा हासिल हो गया। तो मुरब्बे का रकबा, पूरे मुकम्मिल मुरब्बे का रकबा क्या होगा? देखिए आप गौर कीजिए, x जमा y की दूसरी, यानी मुरब्बे का रकबा क्या होगा? ज़िले की दूसरी। ज़िला क्या है इसका? x जमा y मसावी है। आप इस शक्ल पे गौर कीजिए, पूरा मुकम्मिल रकबा क्या होगा? क्या क्या जमा करना होगा मुझे? x की दूसरी जमा यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, तो कितने xy जमा xy, दो मरतबा जमा किया, तो और y की दूसरी है। इसी तरह से xy जमा xy को जमा करने पर क्या होगा? x की दूसरी, xy जमा xy 2xy जमा y की दूसरी। अजीज बच्चों, आइए x माइनस y की दूसरी मसावी है x की दूसरी माइनस 2xy जमा y की दूसरी का अलजबरी सबूत देखें। मुतमासिला x माइनस y की दूसरी मसावी है x की दूसरी माइनस 2xy जमा y की दूसरी की ज्योमेट्री तरीक़े से तस्दीक। यहाँ जो अलामत नज़र आ रही है ये मुतमासिला की अलामत है। उमूमन हम हल करते वक्त मसावी लेते हैं, लिहाजा मैं मसावी कह रहा हूँ। अजीज़ बच्चों देखिए, मुरब्बे का ज़िला x, तो इसका रकबा क्या होगा? x की दूसरी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये कि यहाँ इससे छोटा सा हिस्सा काट दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। इसका एक ज़िला y, दूसरा ज़िला भी y होगा, तब इसका रकबा क्या होगा? y की दूसरी, यानी पूरे मुकम्मिल x की दूसरी में से एक छोटे से मुरब्बे को ऐड किया जा रहा है। तो अब गौर करो बच्चों, इधर क्या होगा? जो बाकी बचा x माइनस y, इस तरह से इधर क्या होगा? ये भी x माइनस y। यहाँ एक मुस्ततिल आ गया तो क्या होगा? इसका रकबा कितना होगा? ये x माइनस y है, ये y है, तो y ज़रब x माइनस y। इसी तरह से यहाँ एक मुस्ततिल है, तो इसका रकबा क्या होगा? देखिए, ये भी y अर्ज है, तूल क्या है इसका? x माइनस y, इसका रकबा y इंटू एक्स माइनस वाई। तब ये बाकी बचा हुआ, देखिए आप, बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? तो पूरे मुरब्बे में से जो बाकी हिस्से काट दिए गए, तो बाकी बचने वाला x माइनस वाई है, ऊपर वाला भी x माइनस वाई है, तो इसका रकबा क्या होगा? x माइनस वाई की दूसरी। प्यारे बच्चों, x माइनस वाई की दूसरी को मालूम करने के लिए आप गौर कीजिए, x माइनस वाई की दूसरी मालूम करने के लिए पूरे x की स्क्वायर में से हम क्या क्या निकाल दे रहे हैं, क्या क्या तफरीक कर रहे हैं अपन। गौर कीजिए, पहले ये हिस्सा, ये क्या है? y ज़रब x माइनस वाई, क्या लिख दिया है? y ज़रब यानी एक्स स्क्वायर माइनस y ज़रब x माइनस वाई। इस तरह से एक और मुस्ततिल है यहाँ y ज़रब x माइनस वाई, फिर क्या है? y की दूसरी। ये पूरे मजमुए को मुकम्मिल मुरब्बा से हम तफरीक करने पर x माइनस वाई की दूसरी हमें हासिल होगा। अब गौर कीजिए, यहाँ पर अब मसावी है x की दूसरी जैसे का वैसा, ये माइनस, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं,
y ज़रब x एक्स वाई लिख दिया मैंने यहां पर। ये माइनस के बाहर को गौर नहीं कर रहे हैं आप, y ज़रब y y की दूसरी, यहां पर x ज़रब y एक्स वाई माइनस y ज़रब y y की दूसरी जमा y की दूसरी, जैसे का वैसा। यहां गौर कीजिए बच्चों, माइनस y की दूसरी काट दिया मैंने, इस तरह से इस प्लस y की दूसरी काट दिया, बच क्या रहा है उसको लिख देंगे अपन। ये x माइनस y की दूसरी मसावी है, ये x की दूसरी जैसे कि वैसा, एक्स वाई कितने एक्स वाई 2xy, ब्रैकेट के बाहर माइनस है माइनस 2xy, फिर माइनस y की दूसरी यहां पर मौजूद है, माइनस जरा माइनस प्लस y की दूसरी, ये रहा x माइनस y की दूसरी मसावी है x की दूसरी माइनस 2xy जमा y की दूसरी का ज्योमेट्रियाई सबूत। आइए बच्चों एक और मुतमासिला, x की दूसरी माइनस y की दूसरी मसावी है x जमा y ज़रब x माइनस y का ज्योमेट्रियाई सबूत का मुशाहिदा करेंगे। मुतमासिला x की दूसरी मसावी है x जमा y ज़रब x माइनस y का ज्योमेट्री के तरीके से सबूत। ये एक मुरब्बा लिया गया है जिसका ज़िला x है, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक x होगा, इसका रकबा क्या होगा x की दूसरी। इसी को बाजू में कॉपी किया गया है, यहाँ भी एक मुरब्बे को मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका ज़िला y है, ये भी y, अब क्या होगा इसका रकबा वाई स्क्वायर। यहां जो बच रहा है बाकी क्या बचेगा, देखिए यहां पर मुकम्मिल x था तो माइनस y कर दिए हमने, तो x माइनस वाई, यहां भी क्या होगा x माइनस वाई। अब इसका रकबा क्या होगा, ये पूरा जो बाकी लाल रंग का हिस्सा बचा हुआ उसका रकबा क्या होगा, मुकम्मिल x की दूसरी में से y की दूसरी को माइनस किया गया है, तो x की दूसरी माइनस y की दूसरी। अब x की दूसरी माइनस y की दूसरी को ये देखिए, अब x की दूसरी माइनस y कॉपी एक सेम है यहां पर, तो अब इसमें से इसको तफरीक कर दिया गया है। तफरीक करने के बाद अब ये जो बाकी बचा हुआ है x माइनस वाई, देखिए गौर कीजिए यहां भी x माइनस वाई तूल वाला है, अगर ये x माइनस वाई को मैं यहां ला के लगा दिया तो क्या होगा, सेम इसका तूल मसावी होगा। और ये क्या था, कितना था, ये y था, y, ये जब y है तो ये पलट के इधर आके लगने पर क्या होगा देखेंगे अपन। अब देखिए आप ये y, ये कितना था x माइनस वाई, अब जुमला कितना हुआ, ये x था, ये y, तो जुमला x जमा y, ये मुस्ततील हासिल हो गया हमारे पास। मुस्ततील का रकबा तूल ज़रब अर्ज, तूल कितना है x जमा y, अर्ज कितना है x माइनस वाई, मुस्ततील का रकबा क्या होगा तूल ज़रब अर्ज, यानी ये जो बाकी जो रकबा था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मसावी है x जमा y ज़रब x माइनस वाई। जमात अश्तुम में एक और मुतमासिला x जमा a ज़रब x जमा b का ज्योमेट्रियाई सबूत पर हम गौर करते हुए जमात नहुम के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मुतमासिला x जमा a ज़रब x जमा b मसावी है x की दूसरी जमा a जमा b x जमा a b का ज्योमेट्री तरीके से तस्दीक। एक मुरब्बा जिसका ज़िला x दूसरी जानिबी x होगा, तब इसका रकबा क्या होगा x की दूसरी। फर्ज कीजिए कि एक और मुस्ततील ली गई है जिसका ज़िला a है, यानी जिसका अर्ज a, इसका तूल x, तब इसका रकबा क्या होगा ax। एक और मुस्ततील यहां पर ली गई है जिसका तूल x और फर्ज करो कि अर्ज b है, तब इसका रकबा क्या होगा bx। यहां एक मुकाम खाली बच गया है जिसका एक ज़िला a हो दूसरा b है, तब इसको अगर हम ले लेंगे तो इसका रकबा क्या होगा ए बी। तब अब देखिए, अब गौर कीजिए यहां पर क्या है एक x जमा a, इधर क्या है x जमा b, इसका रकबा क्या होगा तूल ज़रब अर्ज x जमा a ज़रब x जमा b। ये मुकम्मिल रकबे को मालूम करने के लिए इसमें जो मौजूद है इनको जमा करना होगा। देखिए अब ये x की दूसरी, अब यहां क्या किया गया है, ये ax को इधर लाके जमा करने के लिए x की दूसरी जमा ax, इसी तरह से इधर वाला bx और ये ab, ये सॉरी bx, इसका तूल कितना होगा a जमा b, अर्ज तो हमारे पास मौजूद है x। यहां ये जो बाकी ab वाला है इधर जमा के लिए तरतीब दिया गया है। तब देखो बच्चों, ये x जमा a की दूसरी मसावी है, क्या क्या है हमारे पास x की दूसरी
जमा ax जमा bx जमा ab। यहाँ मुश्तरिक क्या था, x मुश्तरिक था, तो अब यहाँ x को मुश्तरिक लेने पर हमारी मतलूबा मुतमासिला हासिल होगी। x जमा a ज़रब x जमा b मसावी x की दूसरी जमा a जमा bx जमा ab। प्यारे बच्चों, जमात हश्तुम में हमने जितनी मुतमासिलात को सीखा था, इन तमाम का अलजब्राई सबूत हमने यहाँ गौर किया है, ताकि आपको इन अलजबरी मुतमासिलात को याद रखने में आसानी हो। आइए इनके इस्तेमाल से हम हमारी दरसी किताब में मौजूद चंद सवालात हल करेंगे, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर मौजूद है। आप दरसी किताब का सफ़ा नंबर 49 निकालिए। ये दरसी किताब का सवाल है, अज्जाए ज़रबी में तहवील कीजिए। आइए हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल का हल ये, x की दूसरी जमा 5x जमा 4, ये किस मुतमासिला के तहत होगा? यहाँ देखिए, गौर कीजिए, x की दूसरी 5x जमा 4, देखेंगे इसको। आप गौर कीजिए प्यारे बच्चों, x की दूसरी, ये 4 के ऐसे अज्जाए ज़रबी जिनको जमा करने पर 5 आ जाना। क्या होगा? 4 एकन 4, 4 जमा 1 5, यानी ये 5 के बजाय मैंने 4 जमा 1 x जमा 4 एकन 4। किस शक्ल में होगा ये ज़ाब्ता? देखिए आप, x की दूसरी जमा a जमा bx जमा ab मसावी है x जमा a ज़रब x जमा b। यानी हमको सवाल इस शक्ल में दिया गया है, अज्जा ज़रबी की शक्ल में लाना है। तो अब यहाँ x के बजाय क्या होगा? x, a के बजाय 4, b 1 मसावी है, क्या होगा? x जमा a के बजाय 4 ज़रब x जमा b के बजाय 1। ये रहा हमारे पहले सवाल का हल। आइए दूसरे सवाल को हम देखें। दूसरा सवाल, 9x की दूसरी माइनस 25, ये किस शक्ल में प्यारे बच्चों? 9x की दूसरी यानी 3x कुल की दूसरी, ये 5 पंजे 25 यानी 5 कुल की दूसरी, यानी a की दूसरी माइनस b की दूसरी की शक्ल में मौजूद है। सवाल जैसे कि वैसा। अब क्या है, इस सवाल को मैंने क्या किया, 9x की दूसरी था तो 3x कुल की दूसरी, 5 पंजे 25 5 कुल की दूसरी, किस शक्ल में है? x की दूसरी माइनस y की दूसरी। ये ज़ाब्ता लिख दिया मैंने। अब ज़ाब्ते में x के बजाय क्या हमारे पास क्या लेना? x जमा y, x के बजाय 3x जमा 5 ज़रब 3x माइनस 5। आइए तीसरे सवाल की तरफ। ये तीसरा सवाल है, 25 a की दूसरी जमा 40 ab जमा 16 b की दूसरी। हल में सवाल जैसे का वैसा। आप गौर कीजिए प्यारे बच्चों, ये 5 पंजे 25 यानी 5 a कुल की दूसरी की शक्ल में है, ये 16 4 चौक 16 b कुल की दूसरी की शक्ल में है। तो अब क्या करें, ये 40 पे गौर करेंगे आप। देखिए अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 5 a कुल की दूसरी, इस तरह से 4 b कुल की दूसरी जमा 2ab। 2ab दिए 2 जैसे वैसा, a के बजाय 5a, b के बजाय 4b। इन तीनों को जरब देने पर 40ab आना। देखिए जरब देखिए, देखो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40ab आ गया। तो मतलब क्या, x जमा y की दूसरी की शक्ल में ये मौजूद है, यानी x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी की शक्ल में है। तो हमको क्या करना, x जमा y कुल की दूसरी की शक्ल में लाना होगा। ये x के बजाय 5a, y के बजाय 4b दर्ज करने पर इसमें x के बजाय क्या है 5a, 5a जमा 4b कुल की दूसरी, तो दूसरी रहने से 2 मरतबा लिखना होगा। इसी को हम अज्जाए ज़रबी कहेंगे। 5a जमा 4b ज़रब 5a जमा 4b। ये चौथा सवाल है। देखिए ये माइनस में दरमियान में 49x की दूसरी माइनस 112xy जमा 64y की दूसरी। अब इस सवाल में हल में जैसे का वैसा सवाल। तो अब ये 49 के बजाय 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 यानी 7x की दूसरी, इधर 8 अट्ठे 64y की दूसरी। तो दरमियान वाले में 2, ज़ाब्ते का 2, यानी पहली ब्रैकेट में x, दूसरी ब्रैकेट में y। x के बजाय क्या है 7x, y के बजाय 8y। अब इन तीनों को जरा देखिए क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112xy, यानी इस ज़ाब्ते की शक्ल में आ गया। ज़ाब्ता लिख रहा हूं मैं, क्या है x की दूसरी माइनस 2xy जमा y की दूसरी मसावी है x माइनस y कुल की दूसरी। तो अब देखिए x के बजाय क्या दर्ज कर रहे हैं अपन, x के बजाय 7x है, y के बजाय 8y है की दूसरी। 2 मरतबा लिखने पर इसके
अज्जाए ज़रबी हासिल हुए हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए इनकी मदद से हम मज़ीद मुतमासिलात को अख्ज़ करें। x जमा y जमा z की दूसरी को फैलाइए। अब तक हमने 2 अरकान के फैलाव पर गौर किया था, या 3 आए हैं, तो इसको x जमा y की दूसरी के ज़ाब्ते से हम फैलाने की कोशिश करें। देखिए प्यारे बच्चों, x जमा y यानी x जमा इन दोनों को एक ले रहा हूं मैं, x जमा y जमा z एक और है, तो अब क्या y की शक्ल में आ गया x जमा y की दूसरी। तो इसी ज़ाब्ते से हम इसको फैलाएंगे। x जमा y की दूसरी का ज़ाब्ता क्या हमारे पास, x की दूसरी जमा ज़ाब्ते का 2ab, 2a के बजाय x जमा y, ये z y के बजाय, फिर z की दूसरी। इसी को ज़ाब्ते से हम तौसी देंगे, यानी x जमा y की दूसरी का ज़ाब्ता क्या है, x की दूसरी जमा 2xy जमा y की दूसरी। यहां ज़रब दे रहा हूं मैं 2 से, 2x ज़रब z यानी 2xz, 2y ज़रब z, 2yz, ये z की दूसरी। अब इसी को तरतीब से लिख दिया गया है यहां पर, x की दूसरी जमा y की दूसरी जमा z की दूसरी जमा 2xy 2yz 2zx, ये है x जमा y जमा z की दूसरी का ज़ाब्ता। आइए एक और सवाल इसी तरह से माइनस वाला सवाल मौजूद है यहाँ पर, x माइनस वाई माइनस z की दूसरी। इसी को भी हम x माइनस वाई माइनस z की दूसरी, दोनों को एक ले लिया गया है, x माइनस वाई माइनस z की दूसरी। इसको ज़ाब्ते की मदद से हम फैलाएंगे, यानी x माइनस वाई की दूसरी नहीं, माइनस 2xy, x के बजाय x माइनस वाई, y के बजाय z, फिर z की दूसरी। इसको ज़ाब्ते के तहत तौसी देंगे। इसका क्या फैलाव क्या है, इसका x की दूसरी माइनस 2xy जमा y की दूसरी माइनस 2x से z को ज़रब दे रहे हैं अपन, माइनस 2xz, ये माइनस जरा माइनस प्लस 2yz जमा z की दूसरी। अब इनको तरतीब से लिखने पर x की दूसरी जमा y की दूसरी जमा z की दूसरी माइनस 2xy, फिर yz को जमा 2yz माइनस 2zx। इन मुतमासिलात की मदद से आपकी दरसी किताब में मौजूद चंद सवालात हम हल करेंगे। 2a जमा 3b जमा 5 की दूसरी। हल में सवाल जैसे का वैसा, 2a जमा 3b जमा 5 की दूसरी। ज़ाब्ता यहां गौर कीजिए, x के बजाय 2a, y के बजाय 3b और z की जगह 5। ये ज़ाब्ते को लिखने पर x जमा y जमा z की दूसरी मसावी, ये x की दूसरी के बजाय क्या है यहाँ पर 2a की दूसरी, फिर y के बजाय 3b की दूसरी, z 5 की दूसरी, फिर 2xy, 2x के बजाय 2a 3b, 2a 3b जमा 2yz, yz 3b जमा 5 जमा 2zx, z के बजाय 5 2a। अब इसी को हम फैलाकर लिख देंगे, 2a की दूसरी, 2 दुगनी 4 a की दूसरी, 3 तिया 9 b की दूसरी, 5 पंजे 25, 2 दुगनी 4, 4 तिया 12 ab, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 b, 2 पंजे 10, 10 दुगनी 20 a। अजीज तलबा व तालिबात, अलजबरी मुतमासिलात पर मुश्तमिल हमने चंद सवालात को हल किया है। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात आइंदा डिजिटल क्लास में हम हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।